Thank you, Excellencies. We welcome you once again. With this, I would like to request Ambassador Smt.Droupadi to deliver his welcome remarks. And I would once again request the guests to kindly keep their phone on silent. Good evening, Namaskar, welcome. Respected President of Timor-Leste, His Excellency Mr. Honarable, respected President of India, Honorable Smt.Droupadi, Parliamentary of Timor-Leste, His Excellency Foreign Minister of Timor-Leste, Her Excellency Minister of Education of Timor-Leste, distinguished guests, members of the Indian community, friends of India, dear colleagues. It is an immense honor and an absolute privilege for me to welcome you all on behalf of the Embassy of India to this very special event. First and foremost, I extend my deepest gratitude to Honorable Rashtrapati Ji for joining us on this occasion. We are truly delighted by your presence and extend a very warm welcome to you and all members of your esteemed delegation. A hearty welcome to the Honorable Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, St.Jons Ji, and the Honorable Members of Parliament, Shri Soumitra Khan Ji and Shri Jugal Kishore Ji. A special welcome and sincere thanks to His Excellency President Ramos Horta for joining this evening with his signature and unique The Horta Show. Excellency, your presence is a testament to the high importance given by you in nourishing the relationship with India. As both India and Timor-Leste seek to further our bilateral partnership, this historic visit by the President of India, soon after the participation of President Horta at the vibrant Gujarat Summit in January 2024, is hugely inspirational and will energize stakeholders on both sides to come together and unlock the full potential for the mutual benefit of both the peoples. For the Indian community, the visit by Rashtrapati Ji to Timor-Leste is like a dream come true. Another dream of having a resident Indian mission in Delhi has also been realized. Your presence here fills all of us with new energy, making us connected to our homeland Bharat. माननीय राष्ट्रपति जी महोदय, आपका दिल्ली आना हम लोगों के दिल को छू गया है। बरसों से हम जानते हैं कि दिल्ली दूर नहीं है। आपका यहाँ आना अब ये साबित करता है कि दिल्ली भी दूर नहीं है। आपके यहाँ आने से दिल्ली और दिल्ली की दोस्ती दृढ़ बन गई है। The bilateral relationship between India and Timor-Leste is anchored on shared values of adherence to democracy and freedom. India was one of the first countries to establish diplomatic ties with Timor-Leste in 2002. Indian diplomats played a key role in state formation of Timor-Leste. Since then, our relationship has moved forward with significant increase in bilateral visits and exchanges and diversifying the area of engagement and cooperation. This visit at a time when India is commemorating the 10th anniversary of India's Act East policy is indeed opportune. Your visit to Timor-Leste reaffirms India's commitment towards strengthening the Delhi connection, both bilaterally and also as part of ASEAN, which Timor-Leste is also set to become part of. Rashtrapati Ji, the Indian community here is relatively small, but it is very vibrant and remains connected as a large family. They are playing a pivotal role in the economic and social life of this country, and their contribution is much valued.
Despite being a short visit, that you have spared time for meeting and interaction with the community is deeply appreciated. On behalf of the community, I express our gratitude for your kindness and generosity. With these words, once again, I most heartily welcome Honorable Rashtrapati Ji and the esteemed delegation to Delhi and hand over the proceedings to President Horta to conduct the Horta show. Long live India Timor-Leste friendship. Jai Hind. Thank you, Ambassador. As we are about to begin with the author show, once again, I would request all the guests to kindly check if their phones are on silent or not. Limra, Mundo, Australia, Honarable, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, Philippines, China, Japan, Korea, Portugal, Inglaterra, Brasil. Ia, amores, estudam, OCD, Salão Nobre, Rex, Boni, Darando, Programma de Porta Show, o convidado especial, Signora Presidente India, St.Droupadi Murmu, visita ita Iarailan Internet. Programa de hoje especial da TV, o convidado para a tua casa todo o Internet. Ita Serona, Yaguaida o Signore Ferdoida, che buon presidente, Rainer, proprio 1,500,000,000 de habitantes. So, this is a special edition of President of the show. We will conduct this on my side or in English without any. We will first country in the world, India, 1.5 billion people. It is really
Thank you, President, for accepting to be on my show. It is not as popular as, it's not like a hard talk BBC. This is very casual, very simple. Uh, I will start with a question. I presume long. The president actually is much younger than me, which is embarrassed because I should no longer be president because this country is very young people. So, yesterday, today I was talking with some friends, and I said, I cannot really read the biography. I don't know her age, but she looked actually quite young. And so a bit embarrassing because an elderly person from a very young country interviewing. I will tell you my story. Yes, please. So, where are you guys at the peak of the power, the largest country in the world? सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे टिमोर लेस्टे के आने के बाद इस तरह के समारोह में, इस तरह के परिवेश में मुझे आके बिठाए हैं और मेरे जिंदगी का यहाँ तो पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ते से होकर के आना पड़ा, उसके लिए आप लोग मुझे पूछे तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। First of all, Excellency, I would like to thank you for organizing an event like this and for having asked me to recount my story and my journey and all the struggles that I've faced to reach this post. Thank you for that. मेरी जिंदगी एक नदी के पड़ा हुआ एक पत्थर की तरह है, कहाँ भंवरों में, कहाँ पत्थर में टकराते हुए यहाँ में पहुँचते हैं। मैं भारत के एक प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश के एक रिमोट गांव में एक आदिवासी परिवार में जन्म ली, एक फर्स्ट चाइल्ड के रूप में 1958 में जन्म ली। उन दिनों महिलाओं को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, शिक्षित करना ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मेरे पिताजी और मेरे दादी उन्होंने पढ़ाने के लिए जो प्रयास किया। गांव में हम लोगों का जो गांव था वहाँ क्लास 7 था और स्कूलिंग मैंने कंप्लीट किया। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आसपास में कहाँ पे भी हायर एजुकेशन के लिए कोई स्कूल नहीं था, हम लोग बहुत दूर, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक गर्ल चाइल्ड के लिए दूर स्कूल भेजना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए मुझे एक अच्छा व्यक्ति के द्वारा उनके सहयोग से स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर में हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ी। So my life is a bit like a river, and as the river flows, it hits a lot of stones on its path in the river. So my life is a bit like that. I was born in the state of Orissa in a remote village, a remote tribal village. In 1958, I was the first daughter in my family. And in those days, it was not very common practice to send girls to school or to educate girls. However, my father and my paternal grandmother were very keen that I study. In my school, there was a school, in my village, there was a school up to the 7th grade. So I studied there till the 7th grade. But after that, for higher education, there was no school close by to the village, and it wasn't very easy to send a girl child far away to study. But thanks to the help of when I was able to go and study in Bhubaneswar, state, and that was
where I completed my higher secondary education and graduated as well. वहाँ पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा मकसद था पढ़ाई का, मेरा मकसद था फैमिली को सपोर्ट करना फाइनेंशियली, और कुछ जॉब के लिए मैंने प्रयास किया। असिस्टेंट के रूप में पहले मेरा कदम असिस्टेंट के रूप में मैंने जॉब किया। वहाँ 4 साल जॉब करने के बाद फैमिली प्रॉब्लम हुआ, फिर मुझे गांव जाना पड़ा। गांव में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में मैंने काम किया। जो मैं टीचर के रूप में काम किया, बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारे सामाजिक इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। हाँ, सोशल एजुकेशनल फाइनेंशियल अनुष्ठान जो चलाते थे उनके साथ मेरा जुड़ाव हुआ। मैंने सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब लोगों का क्या परिस्थिति, उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ये बहुत सारे अनुष्ठान से मैंने जुड़ी, और बाद में स्कूल 1997 में मुझे कॉलेज करना पड़ा। मुझे बताया गया है गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड एरिया काउंसिल LAC में एक काउंसिल के रूप में अपना कॉलेज की प्रक्रिया To my village, I had to quit my job, and in my village, I started working in a private school teacher. And while so I wanted to do something for their upliftment. So while I was working at school, I associated myself with various but then I had to अपने जो दायित्व किया गया था, इसके बाद उसका टेन्योर 5 साल था, लेकिन खत्म करने से पहले ही मुझे MLA लड़ना पड़ा। मैंने जीती, और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में मुझे ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में, इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में मुझे वहाँ काम करना पड़ा। 2000 से 2002 तक कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, इसके बाद 2002 से 2004 तक फिशरीज डिपार्टमेंट में मैंने मिनिस्टर के रूप में काम किया। दोनों डिपार्टमेंट में एक महिला के रूप में, एक आदिवासी महिला के रूप में मुझे कैसे काम करना चाहिए, मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। मेरे काम को अपना जिंदगी समझता था, और मैं दोनों डिपार्टमेंट को मैं भी बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद 2004 में मुझे टिकट दिया गया, और 2004 में फिर एक बार मैंने MLA लड़ी, और उसमें भी मैंने जीत लिया। So in 1997, I joined politics as a councillor in the district, and I was given responsibilities that I fulfilled for the 5-year term. But before that term ended, I was asked to fight for the state assembly elections, and I fought those elections and I won. So I became an MLA, which is on the assembly of the state. I first was given responsibility to handle transport as a minister, transport and commerce in the very child as a minister from 2000 to 2008. And after that, I was made Minister of Fisheries and Animal Husbandry. So as a woman, as a tribal woman handling these ministries, I received a lot of appreciation for my work. I work on my land, and with both these departments, I did a very good job.
2004, once again I was asked to contest as a member of the Legislative Assembly, which I again fought those elections and I won. 2004 से 2009 तक मैंने MBBS बनी, मुझे उस टाइम रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन वो टाइम मेरे लिए ब्लेसिंग था, भगवान का 2007 में मुझे बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड मिला, जिसको हम वहाँ नीलकंठ अवार्ड मुझे मिला बेस्ट लेजिस्लेचर के रूप में। और 2009 तक मैंने MLA बनी, जिसके बाद मैं और MLA लड़ी थी, लेकिन वो मैं जीत नहीं पाई। बाद में मैं संगठन के लिए 5 साल मैंने काम किया। 5 साल काम करने के बाद मुझे फिर 2015 में मुझे गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में नियुक्त किया गया। So from 2004 to 2009, I was again member of the Legislative Assembly, Governor of Jharkhand. झारखंड जहाँ मैं नियुक्त किया गया, ड्राइवर डोमिनेटेड स्टेट 23% वहाँ ड्राइवर थे। भारत के संविधान में गवर्नरों को अंडर प्रिविलेज ड्राइवरों को सेवा करने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनका अधिकार को संरक्षण करने के लिए स्पेशल अधिकार दिया गया। ये उसी अधिकार के तहत मैं वहाँ प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मैंने घूमी और ज़्यादातर महिलाओं का या बाल चाइल्ड का उत्थान के लिए मैंने काम किया। भारत के संविधान में गवर्नर को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चांसलर के रूप में हायर एजुकेशन